Okay, so good morning, everyone. We meet here again on 3rd of August 2025 and resume our reading of Anubhavatmak Adhyatmavad bilingual version. So in English, the title proposed is Realization Centered Spiritualism. The original book is integral part of Madhyasth Darshan and authored by Shri A. Nagnar. English translation is attempted by me. And so far, in the last 1 year or so, we have covered 110 pages, 109 pages actually, of the original Hindi book, and the book actually has 147 pages. So we straight away go to from where we have to resume today. So just to connect with the previous point where we left off in the last meeting, जब यह स्पष्ट हो जाता है ना, whatever is being discussed earlier, तब यह प्रश्न हो सकता है कि शरीर की आवश्यकता ही क्यों है. Okay, natural question may follow, why is the human body necessary at all? So he has raised this question, and then in the end, like the paragraph is ending at सिद्धांत यही है कि अधिक शक्ति और बल कम शक्ति और बल संपन्न माध्यम के द्वारा प्रकाशित होता है. The principle behind this is that higher strength and power expressed through a medium having lower strength and power. Okay. So जीवन शक्ति और जीवन बल जो है ये अक्षय शक्ति, ये जीवन जो है ये अक्षय शक्ति अक्षय बल संपन्न इकाई है. जीवन इज एन एंटिटी एंडोर्ड विद इनएग्जॉस्टिबल पावर एंड इनएग्जॉस्टिबल स्ट्रेंथ. ओके. और प्राण कोशिकाओं का शक्ति और बल उनके रचना के आधार पर सीमित रहता है. Okay, so biological cells have finite power and strength based on their composition. Okay, so a point comes when the cell no longer exists, so then it does not have that strength and power which it earlier had when it was a cell. Okay. So the point being highlighted here or implied here is that Jivan has has inexhaustible strength and inexhaustible power, and the body has, because body is composed of biological cells, it has finite strength and finite power. Now, continuing from this point, we'll resume what comes further. Let us see. जी शिल्पा. के आधार पर इस धरती पर जितनी भी प्राण कोशिकाओं की रचना है, भैया एक्चुअली आई एम रीडिंग फ्रॉम द फोन, आई एम हैविंग लिटिल ट्रबल, सो Okay. मैं हिंदी का बुक से पढ़ लेती हूँ जी जी. एंड इंग्लिश Of course. का कुछ. हाँ, Of तो ये course. Of पैराग्राफ course. है, दिया जाता है. ओके, आई गॉट इट. ठीक है. इस आधार पर इस धरती पर जितनी भी प्राण कोशिकाओं की रचना है शीघ्र परिवर्ती है. भौतिक रचनाएं दीर्घ परिवर्ती हैं. इसीलिए मानव शरीर प्राण कोशिकाओं से रचित रहने के लिए इसमें परिवर्ती कार्य घटना समीचीन रहता ही है. इस प्रकार शरीर बल और शक्ति अपनी व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होते हुए सीमित और जड़ कोटि में गण्य होना पाया जाता है. रचना सहज श्रेष्ठा मेधस रचना और मेधस तंत्रणा ही प्रधान है. हृदय तंत्र मेधस तंत्र यही मुख्य तंत्र है. इस प्रकार शरीर में मेधस और मेधस तंत्र, हृदय और हृदय तंत्र सह अस्तित्व में शरीर व्यवस्था कार्य संपन्न होना मानव शरीर के लिए रस, रसायन स्रोत, पाचन परिणाम, अनावश्यकता का विसर्जन, ये सब तंत्रणाएं ऊपर कहे गए दोनों तंत्रों के आधार पर कार्यरत रहना पाया जाता है. इसी को शरीर व्यवस्था का नाम दिया जाता है. अगला भी पढ़ लूं भैया, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ. Right. So it is same paragraph. So then when we come to the end of this section, that is where the paragraph ends in the book. या
शरीर जीवंत न रहने की स्थिति में स्वतंत्र रूप में आहार आदि क्रियाओं का संपादन नहीं हो पाता है और ज्ञानेंद्रियों का क्रियाकलाप शून्य हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को मानव ने देखा है। इससे यह स्पष्ट होता है, शरीर को जीवंत बनाए रखने का मूल तत्व जीवन ही है। जीवन ज्ञान के साथ साथ ही यह तथ्य स्वीकार हो पाता है, जब तक भ्रमित रहना भावी है ही, तब तक भ्रमित रहना भावी है ही। भ्रम का सबसे चिन्हित गवाही यही है, शरीर को जीवन समझना। शरीर को जीवन समझने के मूल में जीवन सहज कल्पना ही आधार है। यह भ्रमित रहने के कारण ऐसा मानना होता है। फलस्वरूप जीवन अपेक्षा के विपरीत, मानव अपेक्षा के विपरीत घटित होता है। यही कारण रहा है जागृति विधि को मानव परंपरा को अपनाने के लिए आवश्यकता बलवती हुई। या somebody can read in English. Hmm. Mohan bhai, would you like to read in English? Yes, yes. On this very basis, all biological compositions on this planet change more rapidly than the physical compositions. Therefore, the human body, consisting of biological cells, also undergoes changes. Thus, the physical strength and power of the human body, even when evidently in harmony, is finite and categorized as insentient. As far as composition are concerned, composition of the brain and the nervous system are the best compositions. Cardiac systems and nervous system are the main systems. In this way, harmonious working of the human body is found in the coexistence of brain and nervous system and of heart and cardiac system, and working of all other system like creation of bodily fluids and chemicals, digestion and excretion, and dependent on functioning of the above mentioned two systems. This is called harmony in body. When the body is not alive, functions like intake of food are not accomplished independently, and functioning of sensory organs also stops. Many such examples have been seen by humans. Thus, it becomes clear that Jivan is indeed the basic element which keeps the body alive. It is only with the knowledge of Jivan that this fact becomes acceptable. Till then, one is bound to remain in delusion. The most glaring testimony of delusion is assuming the body itself to be the Jivan. Actually, it is the imaginativeness in Jivan itself which is at the root of assuming the body to be the Jivan. This assumption is due to being in delusion. As a result, events happen which are in contradiction to Jivan expectation and human expectation. This is the reason the necessity for including the method of awakening in human tradition was strongly felt. So I'll explain, Bhaiya, my takeaway from this, my understanding. Yeah, it could. Well, I think. I think. Yes. I forgot to unmute myself. So yes, Okay. Shilpa Didi, you can do that first, and then Mohan bhai also can share Okay. whatever caught his eye in this. Ji. So this is a very long paragraph. It's a one-page paragraph.
So it started by the author saying that the bodily parts, like they do not, they do not evidence understanding in any way. So he gives examples like all our Gyanendriya and Karmendriya, which are our sensory organs. They do not evidence any kind of understanding. Yeah, so So then, Shilpa Didi, so this is a long paragraph. So Shilpa yeah, Didi is I'm going to starting. what we Yeah, covered in the previous yes, section. So this yes. is from where the paragraphs started. So expectation of justice, resolution, and truth is not observed in any part of the human body. Yeah. Okay. Yeah, Yes. please. Yes. Yeah. So, since it is not evidenced, any of this understanding is not evidenced in the body parts. It's only acha lagna, like what we like. So, the author says that anukul vastuon ka sanyog, ya sanikarsh. So, only what is, appearing to be nice, appearing to be comfortable, is like thought of as this is good. But that is in no way what is the right understanding. So, then the question arises, then why the body? So which was the last paragraph that we read earlier in the last class. So the reason is that मानव परंपरा में ही जीवन जागृति और उसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है. So the human body evidences awakening, the Jivan evidences awakening through the human body. And for this, we need Manav Apeksha, Jivan Apeksha. So both of them go hand in hand. So while in the body, the human being exhibits the goals of Manav, which are, Sukh, Samadhan, Samriddhi, Abhay, Se, Astitva, and Jivan goals, which are Sukh, Shanti, Santosh, Anand. So these go hand in hand, both these things. So now they are starting by, then the author states a very beautiful Siddhant, which is the niyam of nature of the cosmos, that इसका सिद्धांत यही है कि अधिक शक्ति और बल कम शक्ति और बल संपन्न माध्यम के द्वारा प्रकाशित होता है. So what is greater is exhibited by a medium. So let's say we have a pen, so this is just a medium to exhibit, evidence all the thoughts I'm having or what I want to express. I mean, we can have colors. So the artist uses colors to, make a painting. So these are just very small things. So now the body is made of prankosha, which is the living cells. And because they are very finite, so, it has a very finite life. So now the Jivan, which is Akshay Bal, Akshay Shakti, which is eternal, that uses a finite medium to express itself, which is the human body. And the beauty of the human body is that we have a Samrit Medhas and we have the Hriday Tantra also. So these two organs, the mind and the heart, like we frequently refer to it in understanding also, like think from the mind, feel from the heart. We should say brain and the heart. Yeah, brain and heart, yes. So the brain and heart are the physical organs, but the coexistence of these two drive the human body. So it drives all the functions of the human body also, which the author goes on to say is, what we intake through the rasas, the rasayans through it, then how we digest it, and then how the excretion is done. So all this creates harmony in the body, which he says as शरीर व्यवस्था को स्थापित का नाम दिया जाता है. And when the body is not alive, so I mean, what how I interpreted it is that when we are unconscious also, we can see that we are not able to eat food, and all our gyanendriya, our sensory organs, they become quiet. So kriya kalap shunya ho jata hai. So there is absolutely um, nothing happening in the sensory organs. So then what is it that drives is the jivan. So when the jivan is there, when the body is alive, so what is it that is making it alive? So the delusion, when we go on to delusion, the main thing is that we think that the body itself is what is alive, but it is not that. It is the jivan which is making it alive. So in this Brahm, in this delusion, we are never able to fulfill the Jivan Apeksha and Manav Apeksha, which was earlier mentioned. So we are never able to fulfill these goals, because from Manav Apeksha we can never get Jivan Apeksha, as Sukh Suvidha will not give us Sukh. Sorry, Suvidha Sangrah will not give us Sukh. So whatever accumulation comforts we have, it will not be the cause of our happiness.
So both these things don't get fulfilled. And what happens is the opposite. इसके विपरीत घटित होता है. So the opposite starts happening, that because of सुविधा संग्रह, we start, it starts creating more samasya or more problems. So it just goes in a reverse cycle. So this is how I understood the whole paragraph, that the author starts with the body, the purpose of the body, then what is the main way the body works, and then how the body and the Jivan, uh, they complement each other, and that is how Jagrati can be attained eventually, the awakening. Yeah. So Mohan Bhai, you can explain the rest. Um, yeah, you, Shilpa Didi, almost explained everything. But what I would see is the answer for why is the human body needed at all, and then explained clearly about the body, how it's functioning, and then how it's harmony with the body, which is and then after explaining then how we still think that we are the body, not the Jivan. And then he explained more about the Jivan there. So it's clearly giving the answer to the why is the human body is needed. And then, Shilpa Didi explained most of all of them. Right. Excellent. Thank you, Thank both of you. Yeah, you highlighted the important points. And I think that's it. I don't have much to add. And the only thing which I see here, which is mentioned is that although, when we study in classroom, when we see that there are so many things in the body, I mean, what the author is saying here is that the brain system, the nervous system, and the cardiac system, they are the main systems in the body, and the others are the ancillary systems. So if there is a big problem in these two, the remaining body parts, they in any case get affected. So this is one thing which is being highlighted here. And body fluids creation, digestion, and kidney functioning, excretion, whatever else is there, that is the ancillary function. It is not to say they are unimportant, but for them also to function properly, this brain and heart, they have to function. Okay, so as far as the body is concerned, this is how the author, in his own words, is describing the functioning of the body. Ji, Shilpa Didi. I just wanted to add this one line in what I said, that this is really beautiful. The physical strength and power of the human body, even when evidently in harmony, is finite and gets categorized as insentient. So even Yes, when the body is perfect, like maybe somebody has perfect health, but even that is yes. fine. It's also very beautiful how the author mentions Right, this. right. Beautifully pointed out. हिंदी में भी दोबारा पढ़ लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। आपने अभी जब बोला, मतलब तो दोबारा से पढ़ने का मन भी कर रहा है। इस प्रकार शरीर, बल और शक्ति अपने व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होते हुए सीमित और जड़ कोटि में ही गण्य होना पाया है ना। बॉडी इटसेल्फ इज इनसेंटिएंट, जड़ और चैतन्य संसार, ये परंपरा में बोला ही गया है। तो शरीर जो है बिल्कुल जितना मर्जी स्वस्थ भी हो, इट इज स्टिल इनसेंट। वेरी 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 फाइन, गुड। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, ब्रह्म का सबसे चिन्हित गवाही है शरीर को जीवन समझना। दिस द ऑथर हैज मेंशन्ड इन अदर बुक्स आल्सो, है ना। शरीर को ही जीवन मान लेना भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम है, या भ्रम का प्रधान बिंदु है। दिस इज मेंशन्ड इन अदर बुक्स आल्सो। सो इसमें वर्ड्स थोड़े से चेंज हो गए। सो आई एम नॉट ओनली द बॉडी। This is something I think this becomes important for all of us. मेरे को personally, I felt it like this. As soon as this clarity, this information came to me, and then the clarity also, the information was instantly acceptable to me, and gradually I worked harder, I studied, and it became clear to me. I realized that
before doing my Jivan Vidya Shivers and reading these books, I did not have this clarity, and it is an important clarity to have. Okay. So it became a priority for me that my children are growing and there are other people around me also. Whosoever is wherever I have a scope of saying something, where I have a space for, like giving some knowledge and the other person is willing to hear, this part is something which needs to be passed on to the next generation. So that, at least this main point of delusion does not get passed on to the next generation. They become clear about what they are. So this is how I look at this whole thing. बढ़िया है ये. Anyone else? Anything? Ganesh bhai, Dev bhai, and someone else is also there. अच्छा, Vandana Didi is also there. Namaste Vandana Didi. नहीं भैया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन स्पेशली द अबाउट द ब्रेन एंड द हार्ट, उसकी फंक्शनिंग, और उसके साथ बाकी शरीर के अंगों का साथ साथ काम करना, इसको बड़ा अच्छा क्लियर से इस पैराग्राफ में बताया गया। और शिल्पा दीदी और मोहन भैया ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थिंग्स जी, आर क्वाइट क्लियर। बढ़िया. Dev bhai. जी भैया, I'm good. I think it was nicely explained. Thank you. And anything on translation? Anyone thinks that कुछ ध्यान किया हो कि maybe we can improve the translation? And that goes without saying that you are welcome to mention that also. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फिर. यहाँ से कौन पढ़ेंगे? भैया मैं पढ़ लेता हूँ। जी जी. हाँ जी। दृष्टा पद का सर्वप्रथम उपलब्धि शरीर का दृष्टा होना ही है। शरीर का दृष्टा होने के आधार पर ही ऊपर इंगित किए गए तथ्य स्पष्ट हुआ है। उक्त तथ्यों को हृदयंगम करने से जागृति की संभावना समीचीन होती ही है। इसी आशय से यह अभिव्यक्ति है। दृष्टा होने का सतत फलन यही है कि हर स्थिति, गति, योग, संयोग, फल, परिणाम, परिपाक और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन होना सहज हो जाता है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, संपन्न मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का मूल्यांकन, अस्तित्व सहज प्रयोजन का मूल्यांकन करता है। यह महिमा अस्तित्व कैसा है स्पष्टतया समझने के उपरांत सफल हो जाता है और सफल होना देखा गया है। भैया इंग्लिश में भी कर लूं? जी भैया, प्लीज. ठीक ठीक। Being the seer of the body is the foremost achievement of the seer plane. The above mentioned facts became clear only after being the seer of the body. By internalizing these facts, the possibility of awakening grows. That is the intention underlying this entire exposition. Natural and effortless evaluation of all states and motions, incidents and coincidences, maturation and consequences and tendencies. This is indeed the end result of being in the seer plane. A person accomplished in knowledge of Jivan and in knowledge of holistic view of existence does the evaluation of humane conduct and the purpose in existence. This state is successfully achieved after clearly understanding the existence, and such success has been achieved. भैया आगे पढ़ो। नहीं भैया, पहले इसी को कर लेते हैं. ये एक ही पैराग्राफ है, मैं हिंदी बुक से वेरीफाई भी कर लेता हूँ. कर लिया है तो इसको एक बार कर ले, फिर अगला वाला भी पढ़ सकते हैं. ठीक है। तो in this paragraph basically it has been mentioned about that the seer of the body is the foremost achievement of the seer plane.
तो दृष्टा पद का जो पहली उपलब्धि है वो शरीर का दृष्टा होना है। मतलब शरीर के माध्यम से ही जीवन देख पाता है। शरीर का दृष्टा होने के आधार पर ही ऊपर इंगित किए गए तथ्य स्पष्ट हुआ है। उक्त तथ्यों को हृदयंगम करने से जागृति की संभावना समीचीन ही है, यानी कि हो सकती है। इसी आशय से यह अभिव्यक्ति है। यानी बेसिकली इसमें जो दृष्टा पद को मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जब अनुभव हो गया और उससे पहले शरीर के माध्यम से दृष्टा हुए, और दृष्टा होने से जब दृष्टा होते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसे हृदयंगम कर पाते हैं, यानी कि वहां पे फिर हमें जागृति की संभावना भी दिखाई देती है। और ये जो ऊपर पैराग्राफ था वो उसी रीजन से बताया गया कि हम शरीर में होने वाली क्रियाओं को भी देख ही पा रहे हैं, हृदय के काम करने या ब्रेन के काम करने को देख ही पाते हैं। इसमें भैया दृष्टा होने एक चीज इसको ना एक चीज मेरे को लग रहा है कि आई वांट टू ऐड हियर, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर एक्सप्लेनेशन। ये ना आप व्हेन यू लुक एट द हिंदी बुक आल्सो, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 110, and this part is actually in bold fonts in the Hindi book also. Right. So bold fonts actually means that the author wants us to look at it again and again. He finds it important. So, so what is important in this? If we remember the title of this chapter, okay, so title क्या है? दृष्टा कर्ता भोक्ता, right? So, so basically, the way I have interpreted it so far is, generally speaking, na, in our Vedanta tradition, in Indian knowledge traditions, there are quite a few things mentioned about, God, ईश्वर ही सब कुछ करता है ना? So ईश्वर को कर्ता पद में रखा हुआ है, राइट? सो दृष्टा शब्द भी परंपरा में आता है, कर्ता शब्द भी परंपरा में आता है, भोक्ता शब्द भी परंपरा में आता है। तो ये दृष्टा कौन है, ये कर्ता कौन है, ये भोक्ता कौन है, दिस इज व्हाट द ऑथर इज highlighting here. So after having discussed whatever has been discussed in the last few pages, now the author is saying that if someone has to reach the seer plane, its first achievement is you are able to see the body. The body will see your body. Okay. So when you see your body, it is implied that you are different than the body. Okay. So you can see something which is different than you. Like I can see my house, I am not the house. I can see my car, I am not the car. I can see my hand, I am not the hand. Okay, so who is that who sees? Right? So seer is Jivan. Okay, this is getting re-emphasized here. So once you understand Jivan, then you are able to clearly see that my body is different than me. So this is the foremost achievement of the seer plane. I am not the body. First of all, it becomes clear in yourself, and then it becomes clear about people around me also. When I look at my spouse, when I look at my children, there also, they are different and their body is different. Okay. This is an important conclusion. This is an important observation. And in day to day, then it becomes my daily routine also to see, like whether it is stabilized in me. Okay, then it becomes my duty and responsibility to see whether it has become stabilized in the people around me also or not. Okay, so if it has not become stabilized in them, अगर उनमें ये स्थिरता नहीं आई है समझने की अभी, so then I look for this is my justice to them. ये न्याय यही है कि ये क्लियरिटी मैं प्रोवाइड कर पाऊं. So with the like linking with the title of the chapter, I thought I will just mention it. वंडरफुल वंडरफुल भैया,
एंड जी बहुत अच्छे से आपने इसको रखा जी कि once we are in the seer plane, we are able to see, that is the Jivan is able to see the body also. So that is a very wonderful explanation of this particular sentence. And in the last paragraph also, we were able to see the body parts functioning as a drishta of seer बन के ही हम देख पाए when we were in the seer plane. नेक्स्ट पैराग्राफ, दृष्टा होने का सतत फलन यही है कि हर स्थिति गति योग संयोग फल परिणाम और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन होना सहज हो जाता है कि when we are in that seer plane and we see every kind of all the situations, the various results, various propensities and various kinds of चीजों का हम एनालिसिस कर पाते हैं, एज ए सीयर ही हम कर पाते हैं. जीवन ज्ञान अस्तित्व ज्ञान संपन्न मानव मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का मूल्यांकन अस्तित्व सहज प्रयोजन का मूल्यांकन भी कर पाता है. तो ये भी बड़ी शानदार बात होगी कि एज इन द दृष्टा जब हम होते हैं तो हम जीवन ज्ञान को भी समझ पाते हैं और अस्तित्व ज्ञान को भी समझ पाते हैं और मानवीयतापूर्ण आचरण को भी समझ पाते हैं. और ये यानी कि अस्तित्व सहज प्रयोजन का मूल्यांकन कर पाते हैं. यह महिमा अस्तित्व कैसा है स्पष्टतया समझने के उपरांत सफल हो जाता है और सफल होना देखा गया है. तो ये पूरे अस्तित्व की महिमा कैसी है तो हम एज ए दृष्टा इसको समझ सकते हैं और समझ के सफल हो सकते हैं और ऐसा देखा गया है. सो दीज आर सम ऑफ द कंक्लूजन्स और अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ that is under the when we are in the seer plane. As a seer we are able to see the body functions, we are able to see various other activities or other things happening around us, we are able to see the knowledge about the jivan, that is, and the knowledge about the coexistence and also about the humanistic or humane behavior. So all this we are able to do when we are in the we are able to understand the existence and the coexistence. Yes, Excellent. भैया. Sorry. Only one thing I want to add, बाकी तो आपने अच्छे से बता ही दिया. You know, this is something which I always can't stop myself whenever I see this style of the author. So if you read this sentence, यह महिमा कि अस्तित्व कैसा है स्पष्टता समझने के उपरांत सफल हो जाता है और सफल होना देखा गया है. Okay, so this state is successfully achieved, and after clearly understanding the existence, uh, uh, and such success has been achieved. Okay, so my interpretation when I read such sentences is that this is the author's style. Uh, that such success has been achieved. You know, ऐसा सफल होना देखा गया है. कहाँ देखा है? Like, but the next question can be, if author is claiming that I have seen that such success has been achieved, where has this success been achieved? So it is implied that the author is saying that I have become successful in this. Okay, but he out of humility, wants to avoid the word that I have become successful. You know, probably he doesn't want people to get a feeling that he's egoistic or something like that. So बड़ा mildly इसको जो है ना, it's the author's style कि इसको ऐसा होना देखा गया है. But the implied meaning is that the author is saying that I have become successful. And most of the time he says that you can also be Yes. the same. Okay. This is the similar thing has been said in the last sentence of the previous section here also. जागृति विधि को मानव परंपरा को अपनाने के लिए आवश्यकता बलवती हुई है ना. So that this जागृति विधि should become part of the human tradition. This like this necessity was felt strongly. Now, who felt this necessity strongly? The author himself felt this necessity very strongly, and he dedicated his life for this. Okay, but he has consciously, I think, avoiding the use of the word "I" in all this. Okay, so let's go. This is I whenever I read these sentences,
I feel like mentioning it. जी देव भैया. Okay, just want to gain some clarity on the first line. So, as per my understanding, seeing um body being seen as some entity already exist. However, what is being mentioned here is seer plane basically means looking at things from the Jivan perspective. Like there is some Right, entity called Jivan that exists, right, and right, then being the seer of the body means that looking at the body as a separate entity, right, right, which is mortal. right, right. Correct, correct. So this is the first stage. Okay, I mean this is one milestone. Once we realize that Jivan is different and the body is different, then in Jivan also, man, vritti, chit, buddhi, atma. Dhire dhire na, dhire dhire, this is what we need to practice, and I think most of us are practicing also. I am able to see my man also. So अभी जीवन बॉडी को देख रहा है, लेकिन in the initial stages we are saying जीवन is one entity, so जीवन is able to see the body. Then जीवन is able to see its own constituents also. Okay, I can see my मन. Okay, मेरा मन ये कर रहा है. Okay, so if I am able to see that also is an achievement. I am having some thoughts. Okay, so I am able to see my thoughts also. I am able to see my analysis also. That is the another achievement. If I can see my desires also, acha, vichar, ichha. Okay, if I can see my understanding also. So धीरे धीरे फिर जीवन में भी इन layers की clarity धीरे धीरे से बढ़ेगी भी. That's a natural fallout of like pursuing this study. Although it is not mentioned in this paragraph, but I thought that for the sake of completion, we may as well talk. GBI is pretty much like what science has been able to discover in body. There is a circulatory system, respiratory system, etc. There must be some systems lying that are part of Jivan as well, as you mentioned. Can we compare like that? Yeah. The only thing is, science is able to prove it with Indriya Gochar Vidhi. Right, right. Okay, this adhyatma, this spirituality part, although it has been going on for thousands of years, one of the biggest challenges it has faced is the evidence part. जी. यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी भैया ऐड करना चाहूंगा। अच्छा क्वेश्चन है देव भैया का कि साइंस भी तो ये कर पा रही है, तो बाबा जी ने यहाँ अलग क्या लिख दिया। तो अभी पर्सनली मैं एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस एक मिनट में शेयर कर देता हूँ। आई वॉज इन हॉस्पिटल लास्ट 15 days। थोड़ी सर्जरी करवानी पड़ी मुझे। तो बट Okay. सबसे अचीवमेंट मैं ये क्या देख पाया कि जीवन विद्या से जुड़ने के बाद शरीर में कुछ भी घटित हो रहा है उससे मैं प्रभावित नहीं हो रहा था, है ना। एक अलग रूप से देख पा रहा था कि ठीक है, कुछ चीजें माइनर हैं वो हो रही हैं। और अदरवाइज आई हैव सीन पीपल की बॉडी में कुछ हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी संवेदना के आधार पर उस तरह की मानसिकता बना लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं इसको सेपरेट कर पाया, तो ये मुझे लगा कि मैं इस लाइन से कोरिलेट कर पा रहा हूँ और देव भैया Hmm. का जो प्रश्न बन रहा था Hmm. उसको भी शायद रख पा Yeah. रहा हूँ I, कि I हम entirely agree. I entirely agree. I have also seen people who will get totally demoralized as soon as something happens to them physically. Okay. Like, so I can see what you're saying. Please continue, Bhaiya. नहीं, बस भैया इतनी ही बात रखनी थी कि यहाँ पे वही बात है ना, जो साइंस में तो वही आपने बिल्कुल सही कहा, इंद्रिय गोचर आधार पर हो रहा है, या जो बॉडीली जो चीजें पहुंच रही हैं ब्रेन तक उस आधार पर हो रहा है। बट यहाँ पे एक सेपरेट संचेतना की जो बात की गई है, कॉग्निटिव एबिलिटी की बात की गई है, कि इट इज टोटली अप टू यू वेदर यू टेक दैट पेन और नॉट। यू कैन रिजेक्ट, यू कैन से आई एम हेल्दी, नो इशू। In spite of the fact that there is something wrong in the body, you can still have the feeling there is nothing wrong with me.
So that is the achievement of the, I can say that of मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या की, ये मैं सेपरेट कर पाया, पर्सनली मैं ये देख पाया। हाँ जी। जी भैया, थैंक यू। Anyone else? Anything on this? Otherwise, you move to the next para. I want to add one thing here. Yeah, Is I used to be, very much interested in, if you know Ramana Maharishi, where Mhm. he used to say, "Who am I?" His main thing was, "Who am I?" And I went through that, and then I, never understood much, even though I used to follow, "Who am I? Who am I?" Sometimes the one thought comes in as, "Who is it? Who gave me that thought?" Something that I used to fight myself. But now I understand who am I is I am the Jivan. So clearly understand if there is something thought comes, I said, oh, it's a work in the vritti. So the vichar comes in. So at least now I'm very clear who am I? Is I am Jivan. Very simple as it is. And the body is Right, different. right, So it is very right. clear now. Before I was not even Yes, trying to figure out who am I. But not only that, who am I exact, Babaji has given everything about it. Who am I? So we can study, and where we are we in man, are we in vritti, are we in chit, everything, kalpana shilta mein. So it's very clear now. So that's all I wanted to add this. Thank you. very nice, very nice. Good to know this. Way. Yeah. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, so these next two sections are the same paragraph, not two. These three. So maybe we can read them in one go. कौन पढ़ेंगे? आई कैन डू दैट। हाँ, आप हिंदी वाला पढ़ लीजिए, फिर मोहन भाई को रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो इंग्लिश वाला पढ़ देंगे। ओके। अस्तित्व संपूर्ण सत्ता में संपृक्त सह अस्तित्व होने के रूप में अपने अपने वैभव को चारों अवस्था में प्रकाशित किया है। यही वर्तमान का मतलब है। जीवन का स्वरूप, स्वीकृति और उसका अनुभव प्रतिष्ठा ही जीवन ज्ञान का तात्पर्य है। अस्तित्व सहज स्वरूप जैसा है, इसका स्वीकृति और उसमें अनुभव स्वयं स्वयं में से स्फूर्त प्रवृत्त स अस्तित्व दर्शन का तात्पर्य है। जीवन ज्ञान स अस्तित्व सहज के प्रकाश में ही अस्तित्व दर्शन सबको सुलभ होता है। इसलिए जीवन ज्ञान पर बल दिया जाता है। विद्या का तात्पर्य ही ज्ञान है। दी अच्छा, हिंदी, सॉरी। यहाँ इस तथ्य का भी स्मरण रहना आवश्यक है, जिन बातों को विद्या अथवा ज्ञान आदि काल से कहते आ रहे हैं, वह कल्पना क्षेत्र में ही सीमित रह गया। दिस इज गुड। इसका साक्ष्य यही है, जिसको ज्ञान आत्मा देवता कहते हुए संपूर्ण साधना, उपासना, अर्चना का आधार मान लिया गया है, वह सब मन बुद्धि का गोचर नहीं है। मन बुद्धि को जड़ क्रिया मानते हुए ज्ञान चेतना इनके पहुंच से बाहर है। ऐसे ही उद्बोधन करते आए। इसके बावजूद बहुत सारे किताब इन्हीं मुद्दे अथवा नाम पर लिखा गया है। ये भी पढ़ूं? ओके। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि जीवन ज्ञान जीवन में से के लिए ही होता है। स अस्तित्व दर्शन ज्ञान स अस्तित्व में से के लिए ही होता है। इन दोनों विधाओं का दृष्टा जीवन ही होना पाया जाता है। फलस्वरूप मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान विधि से दृष्टा पद की महिमा स्पष्ट है। इस विधि से जीवन ज्ञान अर्थात देखने समझने वाला, दिखने वाला भी जीवन सहित स्पष्ट हुआ।
देखने वाला जीवन, दिखने वाला स अस्तित्व दर्शन के रूप में स्पष्ट हुआ। जीवन स अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होने के आधार पर जीवन का अस्तित्व भी सहज होना पाया जाता है। The, the, the entire nature, saturated in omnipotence, itself is existence in the form of coexistence, and its grandeur is exhibited in the form of four orders. This is indeed the meaning of the present. The acceptance of Jivan in its true form and its realization is indeed the meaning of knowledge of Jivan. The acceptance existence in its true form and its realization is indeed the meaning of knowledge of existence. It is only with the knowledge of Jivan in light of coexistence that the knowledge of holistic view of existence becomes accessible to everyone. That's why emphasis is given to the knowledge of Jivan. Vidya means knowledge. It is important to remember here all that which has been regarded as learning or knowledge since ancient times remains within the realm of imagination. The fact that all the words like knowledge, Atma, and gods, which were considered the foundation of all sadhana, worship, and offerings, are, are not perceptible by man and buddhi, is its testimony. Assuming man and buddhi to be insentient, proclamation have been made that knowledge and consciousness are beyond their reach. Despite all this, many books have been written precisely on these points, using these very nouns. It is worth mentioning that knowledge of Jivan is in, by, and for Jivan. Knowledge of coexistent is in, by, and for coexistent. Jivan is indeed the seer of both these segments of knowledge, and as a result, magnificence of the seer plane is clearly by way of knowledge of human conduct. In this way, the knowledge of Jivan became clear that the entity which is seeing and understanding and the entity being seen both comprise Jivan. Knowledge of the holistic view of existence became clear as wherein Jivan is the entity which is seeing and what is being seen is coexistent. As Jivan is an inseparable part of coexistence, its own existence is also found to be natural. Yes. Mohan, if you want to, Thereby can let's begin with Dev. जी भैया, so basically it's um, talking about the, you know, first mentioning that all of nature is actually filled with satta or all powerful force, and this uh, this is more like a balance of everything, which we call as coexistence, and its beauty or grandeur is actually exhibited or shows up in four natural systems or orders, as we, you know, talk about from padartha avastha to jnana avastha, and this is what the present this is exactly the meaning of present. This is one line which I would like to discuss later. uh,
And then moving on to say that understanding and accepting uh, Jivan as it really is the actual meaning of that's what we actually mean by the knowledge of Jivan. And similarly, understanding existence in its entirety or as it truly is, that is the knowledge of existence. And moving on, knowledge of the holistic view of existence becomes accessible to everyone. So so we can only truly understand the bigger picture of existence when we see Jivan in the light of coexistence. And that is why actually learning about Jivan is very important, so important. And Vidya simply means true knowledge of of these two major aspects. So this is what I understand, Riya. And it is important to remember here all that has been right. So so far, what's being referred to as knowledge since ancient times has mostly uh, uh, like a stayed in the realm of imagination actually. And words like knowledge, um, soul or atma, gods, often those are which are often used in spiritual practices like sadhana or worship, and rituals are not actually the things um, that mind or buddhi, like man or buddhi can directly uh, take or grasp. So this actually shows their limits. um, yeah, Moving further on, people have even said that since man and buddhi are not conscious themselves, they can't truly understand the consciousness or knowledge. But then still many books went on to write and use these words, even even though the real meanings are have not really been fully clear. And then the key point in this, I think, is the knowledge of Jivan can only come from Jivan itself, and the knowledge of coexistence can only come from within coexistence. Jivan is indeed the so Jivan is again, as we discussed earlier as well. Jivan is the one who sees and understands both kinds of knowledge. As soon as this is realized, the importance of the seer state becomes obvious. Because that's what leads to true humane conduct. In this way, the knowledge of Jivan becomes clear. In other words, it becomes clear then the entity what is seeing and understanding. Okay, so so this way we understand that Jivan is both the one who sees and understands, and also uh, part of what is also a part of the coexistence, and what is also part of what is being seen. It becomes also clear that coexistence is what is being seen, and the Jivan is the one seeing it. So since Jivan is a part of coexistence, its existence is also natural. So yeah, this is what I understand, Bia. Yeah, natural, and there's a continuity in this. As there's a continuity in existence, existence has always been there and will always be there, right? So Jivan is integral part of coexistence. So it has always been there and it will also be always. Okay, so I think Bia, this line from you, uh, I think clears what I wanted to discuss earlier. वो Okay. एक line थी ना वो present वाला. Yes, 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 I hope that's what yes, 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 that yes. line means. Okay. This I remember. This is यही वर्तमान का मतलब है. हाँ जी, हाँ जी.
तो जो नित्य वर्तमान है बेसिकली सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति, सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट नेचर सैचुरेटेड इन ऑमनीपोटेंस। इसको जो स्थिति सत्य बोला है ना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, this this existence in this form will always be there. Maybe life in the way we see it on this earth, it may not be there billions of years later, but then there will be some other planet where it will be there, or it may be there. So earth is a physical chemical entity. Okay, so it got formed at some point of time, and there is a possibility that it may get deformed also, decomposed also at some point of time. You keep in the whole existence, compositions and decomposition activities are continuously happening. So some planets are getting formed, some planets are getting deformed. Okay, so similarly, in a similar manner, it is very similar to if we look at this earth. Today, all of us are living on this earth. 100 years ago, none of us were on this earth. And maybe 100 years later, none of us will be here in our physical forms as human being on this earth. But humans were there on this earth 100 years ago also, and humans will be there on this earth 100 years later on. Maybe not the same humans. Okay, so the continuity of human species is there. So when we extend this in our imagination, it becomes clear at planetary or social or solar system level also. Solar systems are also getting formed, deformed, and I think this is what is meant by present. So, but yeah, I was again imagining. So the way we define existence and existence, basis this line, can we say that uh, वर्तमान नित्य वर्तमान है? Hmm. Now, this also has been mentioned in many books, in this book also at some places. Okay, so I think the author wants to use different phrases and different uh, sentence structures also to say the same thing from different angles. Maybe to some reader it will click in some way, but I think अस्तित्व नित्य वर्तमान है या यही वर्तमान का मतलब है, both of them are trying to say the same. जी भैया, works. Thank you. Mohan bhai, you want to add on to something? No, it's explained clearly by you and Devaya. It's जी. good. Like, basically the previously Shilpa Didi and I and Ganesh Bhaiya was talking more about the body. Now he's coming with the existence, is the saturated. All the four orders are saturated in the omnipotence. And then he comes back and in the end, added the, Jivan is the integral part of the coexistence. Existence of Jivan too is found to be it's natural, which I kind of, explained it clearly. Yeah, so I mean, the author has mentioned very briefly about man and buddhi in this section here, but I think these are good pointers for us to sort of now see what has been mentioned in our tradition so far. So although I have, let me first put a disclaimer that I have not studied thoroughly the Indian knowledge book, books, which sort of, Veds or Bhagavad Gita or things like that. इनको कभी भी मैंने deeply study नहीं किया है. But the narratives which I heard, I have heard people explaining these things. So one thing which I often hear is that मन जो है ना ये बेलगाम रहता है ना, मन अनियंत्रित रहता है, मन चंचल रहता है और मन को नियंत्रण करना है ना, मन बॉडी के साथ में ये अटैच्ड रहता है. सो मन को काफी बार एक नेगेटिव वे में जो है ना इसको रखा गया है. Okay, so now here in Madhyas Darshan, मन को जीवन का पाठ होता है. So it's this placement itself is a big. So मन is a tool for us. So for Brahmit Manav, for the deluded human beings, man governs because the higher faculties than man
they are not being effective. Okay? But once we have this knowledge of Jivan, this structure of Jivan, the true form of Jivan, Man, Vritti, Chit, Buddhi, Atma, then we can become Drishta of our Man also. And we can very clearly see that this is my man which is driving me to do things which actually I do not want to do, or I am actually not proud of. Yeah. So we may not tell anyone else that I am doing this, but then I myself, I cannot run away from that fact that, I am always seeing my man. ओके सो देन दिस इस मन का भी नियंत्रण जो है ना वो वृत्ति से, वृत्ति का नियंत्रण चित्त से, चित्त का नियंत्रण बुद्धि से, है ना, ये इन दिस फ्लो थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. सो ये मन वाले पार्ट को काफी बार जो है ना वो शरीर के साथ में जुड़ा रहता है, ऐसे करके जो है इसको परंपरा में आई थिंक मतलब कहीं कहीं पे कहा गया होगा. आई एम नॉट ए मास्टर ऑफ दैट, आई रिपीट इट अगेन. लेकिन यहाँ पर जो है वो मन का प्लेसमेंट भी प्रॉपर हो गया है. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल, इट इज पार्ट ऑफ जीवन. इफ नॉट चैनलाइज प्रॉपरली, ऑफ कोर्स, it makes one deluded. But if channelized proper, it's a tool for away. भैया That's बिल्कुल what सही, it is. आप सही कह रहे हैं. एक ट्रेडिशन में एक श्लोक भी है, वो एग्जैक्टली श्लोक तो याद नहीं है, पर उसमें ये लिखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज नॉट पॉसिबल थ्रू मन एंड बुद्धि. उससे भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस को हम समझ पा रहे हैं इन सब Right. टूल्स की हेल्प से. और तो अपना ये बिल्कुल मन लगा के ही समझ पा रहे हैं. मन ना यस लगे यस तो कहाँ से समझेंगे. एग्जैक्टली exactly. तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और बहुत मतलब इट्स इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है ना. ये अंडरस्टैंड भी हो पा रहा है कि नहीं यार, यहाँ पे ये बात बड़ी शानदार लिखी गई है जो ट्रेडिशन में नहीं आई थी. Hmm. So many proclamations have been made that knowledge and consciousness are beyond the reach. Despite all this, well, it is beyond the reach. फिर भी a lot of books are being written to explain them, and in explanation, it is being written that it cannot be understood. So it's a dilemma actually. So, so that's what I had to say. Anyone else on anything? Vandana दीदी, आप काफी देर से साइलेंट ही हैं. Anything you have to say? नहीं भैया, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं सुन रही हूँ. चलिए ठीक है दीदी, ध्यान रखिए जी. गुड देन, आगे बढ़े क्या? जी. ठीक है. सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इट इज नॉलेज ऑफ जीवन इज इन बाय जीवन. अब हमको यहाँ से पढ़ना है. ठीक है, कौन पढ़ेंगे? हाँ भैया गणेश मैं भैया. पढ़ लेता हूँ. जी हाँ जी 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 हाँ जी. जी. प्रमाणों के मुद्दों पर अध्यात्मवाद सर्वप्रथम शब्द को प्रमाण मान लिया गया. तदंतर पुनर्विचार पूर्वक आप्त वाक्यों को प्रमाण माना गया. तीसरा, प्रत्यक्ष अगम अनुमान को प्रमाण माना गया. ये सभी अर्थात तीनों प्रकार के प्रमाणों के आधार पर अध्ययन गम्य होने वाले तथ्य मानव परंपरा में शामिल नहीं हो पाए. इसी घटनावश इसकी भी समीक्षा यही हो पाती है, यह सब कल्पना का उपज है. शब्द को प्रमाण समझकर कोई यथार्थ वस्तु लाभ होता नहीं. कोई शब्द यथार्थ वस्तु का नाम हो सकता है. वस्तु को पहचानने के उपरांत ही नाम का प्रयोग सार्थक होना पाया गया है. इसी विधि से शब्द प्रमाण का आशय निरर्थक होता है. आप्त वाक्यम प्रामाण्यम. आप्त वाक्यों के अनुसार कोई सच्चाई निर्देशित होता हो, उसे मान लेने में कोई विपदा नहीं है. जबकि चार महावाक्य के कौन से चार महावाक्य रूप में जो कुछ भी नाम और शब्द के रूप में सुनने में मिलता है, इससे इंगित वस्तु अभी तक अध्ययन परंपरा में आया नहीं है. When it came to evidence, initially spiritual thoughts considered words to be the evidence. Later,
With consideration, credible sentences, that is apt vakya, were taken as the evidence. Thirdly, apparent, prediction, and inference were taken as evidence. Based on these three types of evidence, facts worthy of studying could not become part of human tradition. Due to this, it can be concluded that all this is the result of the pure imagination. Reality is not grasped or understood by assuming words to be the evidence. A word can be a name indicating a reality. It is only after recognizing the reality that its name becomes meaningful. In this manner, the assumption that words are the evidence is proven to be meaningless. It has been mentioned that credible sentences are the evidence. If credible sentences actually indicate some reality, there is no harm in accepting them. However, study of the facts and realities indicated by the names and words used in four epic sentences is yet to become part of the human tradition. भैया आगे पढ़ो। नहीं, इसको एक बार कर लेते हैं भैया, क्योंकि ठीक मुझे है। लग रहा है कि इस पे कुछ बातचीत भी होगी ही। तो additionally what I did was I thought that it will be some curiosities will be there and we may need some discussion. तो इसमें ना हमारी परंपरा में 4 महावाक्य के रूप में कुछ अच्छी बातें कही गई हैं। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ देम अर्लियर, लेकिन मतलब यहाँ पर आकर के फिर ऐसा लगा कि भैया ये भी पता रहे हम सबको कि जो ये 4 महावाक्य हैं ये हैं क्या, है ना। सो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन दे शुड बी पुट इन फ्रंट ऑफ अस। सो आई डिड सम गूगल सर्च। ओके, अगेन आई एम नॉट claiming responsibility and I could be wrong also, but Google search told me that these are the 4 महावाक्य। ये तो एक है प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना। इसी को गूगल में सम पीपल हैव ट्रांसलेटेड कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म और ब्रह्म इज प्योर कॉन्शियसनेस। इन एनी आइदर वे पीपल हैव इंटरप्रेटिंग इट। दूसरा है अहम ब्रह्म अस्मि। तीसरा है तत् त्वम असि। और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। राइट, सो इसको 4 महावाक्य के रूप में हमारी परंपरा में बोला गया है। ओके, सो व्हाट द ऑथर इज सेइंग इज कि इस सब से ये अब ये महावाक्य हजारों साल से हमारे पास में है, लेकिन डिड वी अंडरस्टैंड? दिस इज a question we have to ask ourselves. So all of you will answer it for yourself only. We don't have to answer to each other. But I have no hesitation in saying that I or in my family, no one understood these sentences. I grew up, when I got married, I was working in professional world. Like the clarity about what these 4 Mahavakyas are saying, I mean, that clarity did come to me. Okay, so महावाक्य का मतलब जो है, what the author is trying to say, I think, is that these are some insights, some pearls of wisdom, and pearls of wisdom are useful for everyone, so everyone should understand them. लेकिन at large, when we see, people have not understood them. Okay, have we understood or not? We have to ask ourselves also. So अगर समझ में आ गया होता तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी। दिस इज व्हाट इज सेइंग, है ना। तो जो कुछ भी आप्त वाक्यों के अनुसार कोई सच्चाई निर्देशित होता हो तो उसे मान लेने में कोई विपदा नहीं है ना। इफ दीज सेंटेंसेस, क्रेडिबल सेंटेंसेस, एक्चुअली इंडिकेट सम रियलिटी, देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग देम। ओके, सो बट एटलीस्ट हमारे तक तो या आम आदमी तक रियलिटी नहीं पहुंची है, ऐसा जो है ये कह रहे हैं। सो ये मुझे लगा कि ये 4 महावाक्यों का रेफरेंस आया तो ये हमारे सामने रहे। बाकी गणेश भैया आप अपना इंटरप्रिटेशन रख सकते हैं। हाँ जी भैया। In this paragraph, it's written, when it came to evidence, initially spiritual thoughts considered words to be the evidence. तो
वर्ड्स को ही सब कुछ मान लिया गया। उस रियलिटी के को अच्छे से समझने की बात, या वो कह दिया गया कि ये रहस्य है, समझ से बाहर है, इंद्रिय गोचर नहीं है, ना ना ही ज्ञान गोचर है। ये सारी चीजों को इस तरह से रखा गया कि इसको समझना मुश्किल है। सिर्फ वर्ड्स दे दिए गए। जैसे यहाँ चार महावाक्य की भी बात आपने करी कि ये वर्ड्स दिए गए कि बेसिकली कॉन्शियसनेस जो है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, और ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो बाबा जी का तो शुरुआत ही यहीं से हो गई कि सब कुछ ही ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म अलग से आके बैठ क्यों गया, शरीर में क्यों आके बैठ गया? यहाँ से बाबा जी ने वो जो अपना अध्ययन शुरू किया था, ये सेंटेंस भी एक जगह आया था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि शब्दों से बेसिकली होगा क्या जब तक रियलिटी ना हो। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे कुछ क्रेडिबल सेंटेंसेस हैं, वर टेकन एज द एविडेंस, उनको एविडेंस ले लिया गया। और तीसरा, एपरेंट प्रिडिक्शन एंड इन्फरेंस वर टेकन एज एविडेंस, जो कुछ चीजें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं उनको बिना जाने मान लिया गया। और इस तरह से हुआ क्या, बेस्ड ऑन दीज थ्री टाइप्स ऑफ एविडेंस, facts worthy of studying could not become part of human tradition। तो कुछ जो जो थ्री जो बेस्ड ऑन दीज थ्री टाइप्स ऑफ एविडेंस जो ऊपर मेंशन किया गया कि शब्दों को लिया गया या फिर कुछ क्रेडिबल सेंटेंसेस को लिया गया, उसके आधार पर ह्यूमन ट्रेडिशन को समझना पॉसिबल नहीं हो पाया, ह्यूमन ट्रेडिशन में समझना पॉसिबल नहीं हो पाया। And due to this, it can be concluded that all that is the result of pure imagination। तो ऐसा लगा क्या कि ये प्योर इमेजिनेशन की ही बात हो रही है, और इसमें रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज नॉट ग्रास्प्ड और अंडरस्टूड बाय अज्यूमिंग द वर्ड्स टू बी एविडेंस। तो जब तक इसमें रियलिटी ना दिखाई दे, ना समझ में आए, तो वो एक शब्द मात्र ही रह गए। ए वर्ड कैन बी नेम इंडिकेटिंग ए रियलिटी। लेकिन बाबा जी ने कहा कि एक शब्द रियलिटी को इंडिकेट भी कर सकता है। इट इज ओनली आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी दैट इट्स नेम बिकम्स मीनिंगफुल। जब कोई रियलिटी है तो उसको कोई नाम दिया गया है, देन तब ये समझ में आता है, ये मीनिंगफुल हो जाता है। इन दिस मैनर द assumption that words are the evidence is proven to be meaningless। तो सिर्फ वर्ड्स ही एविडेंस हैं, वो मीनिंगलेस बन जाता है unless there is some reality attached to that। It has been mentioned that credible sentences are the evidence। तो फिर कहा गया कि चार credible sentences हैं वो ही evidence हैं, और यहाँ पे चार महावाक्यों की बात की गई। If credible sentences actually indicate some reality, there is no harm in accept। अगर इसमें से भी कोई रियलिटी निकल के आ जाती है तो फिर इनको भी एक्सेप्ट करने का कोई दिक्कत नहीं है। However, the study of the facts and realities indicated by the names and the words used in the four epic sentences is yet to become part of human tradition। तो अगर ये ह्यूमन ट्रेडिशन का पार्ट तो बन नहीं पाई है। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो आप भी ब्रह्म है और ये आत्मा ब्रह्म है, तो वैसा कुछ दिखता नहीं है, रियल लाइफ में दिखता नहीं है। और ऐसा लगता है कि जो बाबा जी के जो सेंटेंसेस हैं कि जड़ चैतन्य इकाई जो है वो सत्ता में संपृक्त है, दैट इज दे आर दैट यूनिट्स आर सैचुरेटेड इन द omnipotence और omnipresence, then that इज बीइंग अंडरस्टूड, वो समझ में भी आता है। जबकि इन चार महावाक्यों से चीजें समझ में नहीं आ रही, तो किसी रियलिटी की तरफ हम नहीं जा पा रहे। सो दैट इज व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज 2-3 पैराग्राफ्स। बढ़िया भैया, तो काफी अच्छे से आ गया इसमें। आई डोंट हैव मच टू ऐड हियर। एनीवन एल्स? देव भाई, मोहन भाई? ये शांति कुंज में भी जाओ ना, वहाँ एक सेंटेंस बड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, शांति कुंज इज इन हरिद्वार। ओके। इट्स पंडित श्री राम शर्मा जी ने इसको बनाया, और बहुत अच्छी जगह भी है। और हमारे हाँ। बहुत सारे प्रबोधक पहले वहां पे भी गए हैं अपनी जीवन यात्रा में। तो अच्छा। वहां पे, हाँ, वहां पे एक सेंटेंस है और हमें भी बड़ा स्ट्राइक किया था, और हमने अपने घर पे लिखवाया था, जो अब समझ में नहीं आता। वो सेंटेंस क्या था? आई एम दैट whom the Almighty has incarnated in human form, why should any task be difficult for me? Why should be any prescribed task be difficult for me? यानी ओके। वहां पे क्या बताया गया कि
ईश्वर ने हम्म स्वयं को हमारे रूप में हम्म किया है। हम्म तो हम्म अभी ये सेंटेंस जब हम जीवन विद्या को पढ़ रहे हैं तो एक दोनों एंटाइटी सेपरेट हैं, और मुझे ये लगता है कि हम एग्जिस्टेंस और कोएग्जिस्टेंस को देख सकते हैं, बट बेसिकली हम व्यापक नहीं हैं, ये समझ में आ रहा है। हम्म हम्म। Many times I have personally felt that after reading these books and after doing shivers, many things which are being said in spirituality, they also start making better sense. Thank you for saying that. Okay, okay. So those things which looked very mysterious earlier, now we can actually see what their authors were also trying to say. ओके, तो ये जो है ये पूरा का पूरा अध्यात्म से रहस्य का पर्दा हट गया है ना? मतलब ये एक ऐसा जो है वो लगता है, इसीलिए बाबा जी ने कहा भी है, इस पुस्तक का नाम अनुभवात्मक अध्यात्मवाद रखा है। एंड द ऑथर हैज एट मेनी टाइम्स हैज सेड दैट so far it is mystery based spiritualism. Okay, now it is realization based. Someone who has realized, who has really understood the spiritualism. Okay, so then that person is writing this book. So that's it. I'm good with this. Anyone else has to say, add to anything in this paragraph? Otherwise, we can. शुड वी मूव फॉरवर्ड? हाँ, कर लेंगे थोड़ा सा जी। इतना ठीक है, आगे बढ़े क्या? ठीक है। देव भाई, आप पढ़ेंगे? जी। आप्त वाक्य जब अध्ययन गम्य नहीं है, मान्यता के आधार पर ही है, तर्क तात्विकता की कड़ी है, अध्ययन तर्क संगत होना आवश्यक है। ऐसे में आप्त पुरुषों को भी पहचाना जाए। यह प्रश्न चिन्हाधीन रह गया। कोई भी सामान्य व्यक्ति भय, प्रलोभन और संघर्ष से त्रस्त होकर किसी को आप्त पुरुष मान लेते हैं, तब उन्हीं के साथ यह दायित्व स्थापित हो जाता है। आपने कैसे मान लिया? इसके उत्तर में बहुत सारे लोग मानते रहे, अथवा मैं अपने ही खुशी से मान लिया हूँ, यही सकारात्मक उत्तर मिलता है। ऐसे बिना जाने ही मान लेने के साथ ही संपूर्ण प्रकार से कल्याण होने का आश्वासन भी देते हैं। साथ ही सारे मनोरथ या मनोकामना पूरा होने का आश्वासन देते हैं। ऐसा आश्वासन देने वाला व्यक्ति के संयोग से आस्थावादी माहौल या भीड़ का होना देखा गया है। ऐसे भीड़ से कोई एक अथवा संपूर्ण भीड़ के द्वारा जीवन अपेक्षा मानव अपेक्षा फलीभूत होना इस सदी के अंतिम दशक तक देखने को नहीं मिला। Should I continue or? Mohan bhai, you want to read the English translation? So Devaya, continue, please. जी। If credible sentences cannot be studied or examined, it implies that they rest solely on assumptions. Logic is the bridge to understanding reality, and it is essential for the process of study to be logical. In this background, how to recognize credible persons? This question remains unanswered. When any common person, under the influence of fear, temptation, or distress, uh, believes someone to be a credible person, the responsibility to justify that belief lies solely with them. Everyone else was believing so, and so did I,
or I believed on my own accord. This is the general answer one gets. All such faith-based acceptances of credible persons are accompanied with assurances of well-being and fulfillment of all wishes and desires. A large following and crowd of faithfuls is seen at such places and with all such persons. Fulfillment of Jivan expectation or human expectations of the crowd or any individual among the crowd has not yet been seen till the last decade of the 20th century. Okay, so I think I can relate to this. Um, so when we actually look around, there are a lot of people who have so-called achieved something in their lives. When I say achieve, uh, generally it is generally we are talking about fame, or money, or some kind of Worldly pursuits. right, some kind of things that are seen as powers. And and I always had this question that these people are then looked up to as people who can deliver certain uh, good speeches, good practices, or teach things to other people. आपने इतने बड़े फेम लिया है, प्रसिद्धि लिया है, तो आपका उनसे उन्हीं से बेसिकली जीवन ज्ञान भी लिया जाता है इंटरव्यूज में और Hmm. बुक्स के थ्रू, एंड पीपल फॉलो देम एक्चुअली. I mean, I also tend to, for example, I've read biographies of like Sachin Tendulkar, you know, Hmm. a couple of times, and impressive. I found them pretty impressive, and I see now that unfortunately that is how it is across. And another example I can give is, for example, in corporates, if there are like leaders sitting at certain high positions. For example, recently what happened, some of the senior managers, senior ops managers uh, were put to be as judges of a photography contest. So I never understand that what is the relation of you being a senior ops manager and photography. Are you expert in photography? Okay. Right, the expert in photography can be like a first level employee as well, and why can't that person be judge? So I think that's how, unfortunately, that's how it is. I mean, Jivan Gyan is normally taken by the people who have achieved all the materialistic pleasures, and I think that's what is being referred to here, if I'm not wrong. And uh, and then towards the end of it, this has not been proven so far that they have actually been able to deliver uh, uh, what is being expected, what is expected, uh, what is this crowd expecting as the fulfillment of Jivan, or true meaning of Jivan. So that's what I wanted to share with you. Okay. So I think when I was reading it and translating it, like I was looking at it mostly that when आप पुरुष की बात हो रही है जब, so people who have achieved something in traditional spirituality. I think I was not thinking of, let's say, businessmen or corporate managers or Sachin Tendulkar. I was, ये आप्त पुरुष, जैसे ये आप्त वाक्यों की भी बात हो रही थी, है ना? तो ये आप्त वाक्य जो है ये स्पिरिचुअलिटी से आ रहे हैं. दे आर नॉट कमिंग एज मैनेजमेंट स्लोगन्स, ओके, और मैनेजमेंट इनसाइट्स. तो ये आप्त वाक्य चार महावाक्य की बात है, और फिर कह रहे हैं कि आप तो वाक्य अध्ययन गम में नहीं है. राइट. तो मुझे ऐसा लगा, तो इस सेंस में अब एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं देव भाई, कि जो ये आप वाक्य है ये जब अध्ययन गम में नहीं है तो ये मान्यता के आधार पर ही है.
So I am reading it like this sentence ends here, although it is a comma, but otherwise हिंदी में पढ़ने में it took me a few readings to figure out कि यहाँ पर कह क्या रहे हैं. सो आप्त वाक्य जब अध्ययन में नहीं है, इसका मतलब है वो मान्यता के आधार पर है. दिस सेंटेंस एंड्स हियर. So if credible sentences cannot be studied or examined, it implies they rest solely on assumptions. ठीक है, तो एक तो ये इसको ऐसे देखा. फिर दूसरी चीज कह रहे हैं, तर्क तात्विकता की कड़ी है और अध्ययन का तर्क संगत होना आवश्यक है ना. तो अगर मतलब हमें अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, इवन आप्त वाक्यों की भी स्टडी करनी है, अगर हमको ईश्वर की भी स्टडी करनी है, तो वो लॉजिकल ही होनी चाहिए, क्योंकि तर्क ही हमको तात्विकता तक, सच्चाई तक लेकर के जाता है. तर्कहीन सच्चाई जो है वो स्वीकार नहीं होती. तो तर्क तात्विकता की कड़ी है और अध्ययन का तर्क संगत होना आवश्यक है. तो इसको लिखा है, ट्रांसलेशन का अटेम्प्ट किया है, लॉजिक इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टडी टू बी लॉजिकल. ठीक है, तो एक तो ये वाला सेंटेंस दे भाई बताएं कि इतना ठीक लग रहा है, क्योंकि आप भी ट्रांसलेशन को काफी बारीकी से देख लेते हैं. तो ये आपके इनपुट चाहिए. ये मेरे को तो ठीक लग रहा है ये. जी, बढ़िया दीदी. सॉरी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट. जी भैया, ठीक लग रहा है. ठीक लग रहा है ना. तो बेसिकली ये अब आप्त वाक्य जो है ये महावाक्य हुए, या और इस तरह के और भी अच्छे सेंटेंसेस हैं जिनको हम परंपरा में, जैसे मध्यस्थ में सूत्र कहते हैं, तो परंपरा में भी इस तरह से कुछ सूत्र जो है वो लिखे गए होंगे, लिखे गए हैं, उन्हीं को ही शायद आप्त वाक्य भी कह रहे हैं. तो ये मान्यता के आधार पर है अगर अध्ययन गम्य नहीं है, और तर्क जो है वो तात्विकता की कड़ी है. लॉजिक इज द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टडी टू बी लॉजिकल. अब जो है वो कहता है, कह रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं ऐसे में आप्त पुरुषों को भी कैसे पहचाना जाए, है ना. जब आप्त वाक्य जो है वो भी एजम्पशन के आधार पर है, तो क्या आप्त पुरुष भी कहीं एजम्पशन के आधार पर तो नहीं हो गया, है ना. सो इन दिस बैकग्राउंड, हाउ टू रिकॉग्नाइज क्रेडिबल पर्संस, है ना. मतलब हम देखते ही हैं कि अब जो है ना, ये एक जनरल संवाद हो गया. ये वाली दो चीजें थी, ये मेरे को लग रहा था कि इसकी हम डिटेल में बात कर लें. फिर मेरे को लग रहा है कि व्हाट द ऑथर इज सेइंग इज कि हम देखते ही हैं कि कुछ महापुरुषों के रूप में, बाबा जी के रूप में, कुछ पहुंचे हुए व्यक्ति के रूप में, किसी व्यक्ति का किसी ज्योग्राफी में, किसी क्षेत्र में, किसी संप्रदाय में एक 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 उसको श्रेष्ठ मान लिया जाता है, और लोग उनके पास में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए जाते ही हैं, है ना. तो अब जो है ये उसको शुरू कर दिया. In this background, how to recognize credible persons? This question remains unanswered. When any common person, under the influence of fear, temptation, or distress, believes someone to be a credible person, है ना, किसी के प्रति आस्था हो जाती है, तो फिर वो उनके वहां पे जाता है ना. कोई कोई हर सोमवार को जाता है, कोई कोई हर शुक्रवार को जाता है, कोई कोई बाहर रोज सुबह जाता है. तो वो देन वो फिर उनके पास में जाते हैं. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्टिफाई दैट बिलीफ कि मैंने किसी को आप्त पुरुष मान लिया है, ये जो जा रहा है वही बताएगा कि मैंने क्यों मान लिया ना, कोई और तो बता नहीं सकता. तो ये कह रहे हैं कि हिंदी में कि किसी को आप तो पुरुष मान लेते हैं, तब उन्हीं के साथ ये दायित्व स्थापित हो जाता है कि भाई आपने कैसे मान लिया, आप ही बताओगे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्टिफाई दैट बिलीफ लाइज सोलली विद देम. इसके उत्तर में बहुत सारे लोग मानते रहे. इसके उत्तर में क्या आता है, अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर भी एक वो है, इसके उत्तर में ये आता है. अब जो उत्तर है वो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग मानते रहे इसलिए मैं भी मान लिया. ठीक है, या मैं अपनी खुशी से मान लिया,
है ना। तो दो चीजें, या तो बहुत सारे लोग मानते रहे इसलिए मैंने मान लिया, या मैं अपनी खुशी से मान लिया, आपको क्या लेना देना इससे, राइट। तो ये उत्तर मिलता है ऐसे में। सो एवरीवन एल्स वाज बिलीविंग एंड सो डिड आई, और आई बिलीव्ड इट ऑन माई ओन अकॉर्ड, दिस इज द जनरल आंसर वन गेट्स। ठीक है। ऐसे बिना जाने ही मान लेने के साथ ही संपूर्ण प्रकार से कल्याण होने का आश्वासन भी देते हैं, साथ ही सारे मनोरथ मनोकामना पूरी होने का आश्वासन देते हैं। ऑल सच फेथ बेस्ड एक्सेप्टेंसेस ऑफ क्रेडिबल पर्संस आर accompanied with assurances of well-being and fulfillment of all wishes and desires। है ना, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो घर में शांति आ जाएगी। एक कोर्ट केस 10 साल से चल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा तो कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा। है ना, ये इस तरह की चीजें जो है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, बाबा जी के पास में जाएंगे वो, है ना, भस्म मिलेगी। और तो बड़ी सारी चीजें जो है वो इस तरह की हम लोगों ने अपनी परंपराओं में देखा है कि लोग किसी कष्ट से पीड़ित हैं, है ना, कोई स्वास्थ्य का हो सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है, और फिर वो जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि इनके आशीर्वाद से चीजें हो जाएंगी। ऐसे आश्वासन स्थली आश्वासन देने वाले व्यक्ति के संयोग से आस्थावादी माहौल या भीड़ का होना देखा गया है। ए लार्ज फॉलोइंग एंड क्राउड ऑफ फेथफुल्स इज सीन एट सच प्लेसेस एंड विद ऑल सच पर्संस, सो कॉल्ड क्रेडिबल पर्सन, है ना, आप्त पुरुषों के साथ में। ऐसी भीड़ से कोई एक व्यक्ति अथवा संपूर्ण भीड़ के द्वारा जीवन अपेक्षा मानव अपेक्षा फलीभूत होता हुआ इस सदी के अंतिम दशक तक देखने को नहीं मिला है। फुलफिलमेंट ऑफ जीवन एक्सपेक्टेशन और ह्यूमन एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्राउड और एनी इंडिविजुअल अमंग द क्राउड हैज नॉट येट बीन सीन टिल द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century। बताएं। तो ये बेसिकली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितना अपने आसपास जो हम देख ही रहे हैं कि, है ना, मतलब ये कुछ सो कॉल्ड अध्यात्म में पहुंचे हुए लोग हैं, है ना, और उनके वहां पर भीड़ भी हम सबको दिख ही रही है। कई बार हमारे भी आसपास के लोग या हमारे परिवारों में भी कुछ इस तरह की आस्थाएं हो सकती हैं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो उस सब के बेसिस को नागराज जी जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये आप्त वाक्यों से शुरू हुए थे, उसी को ही बढ़ाते हुए आप्त पुरुष तक आए। ऐसा देव भाई, जैसे आप वो शुरू में जैसे मैनेजमेंट और उनका कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो स्पिरिचुअलिटी वाली साइड पे फोकस्ड है, ऐसा लगा मुझे। जी भैया, आई वॉज एक्चुअली अगेन आई विल थिंक अबाउट इट, बट आई वॉज ट्राइंग टू derive a comparison. बिल्कुल वो ठीक है, आई एग्री जी, राइट, एनालॉजी देख रहे हैं। जी जी। हम्म, वो ठीक है। बताइए, एनी ऑब्जर्वेशंस, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? मोहन भाई टोटली साइलेंट। No, no, everything is good. Enjoying it. Yeah, yeah. गणेश भैया? बढ़िया भैया, लास्ट पैराग्राफ तो बिल्कुल बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं जो हुआ है, जी जी जिस चीज को ऑब्जर्व किया है। जी बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा आज का। जी। वंदना दीदी, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? ये भैया बहुत बढ़िया रहा। देव भाई, एनीथिंग? Maybe all good. I think there is a lot to think about. यस, यस, मजेदार है। यस, 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 गुड।
Very good. So we close here, and I have marked the point from where we'll resume our reading next week. Okay. Thank you. All right. See you guys Thank again you. next week, Thank, same time. thank Okay. you. Bye. Namaste.